रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अपनी पिछली वीडियो में 5 मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स पढ़े थे, यानी 5 मेन जगहें जहाँ से हुरूफ को अदा किया जाता है। अरबिक लैंग्वेज में इनको मखारिज कहा जाता है। आज हम उनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद द लेटर्स विल प्रोनाउंस फ्रॉम द लिप्स। जो लेटर्स लिप्स से प्रोनाउंस होते हैं, आज हम उन लेटर्स को पढ़ेंगे। ये 4 लेटर्स हैं। देयर आर 4 लेटर्स, बा, फा, मीम and wow. So we'll see that how we're going to pronounce these letters from the lips differently, because lips जो है वो एक पार्ट है बॉडी का, और इसमें हम 4 different letters को pronounce करेंगे, तो उसमें क्या difference होगा। So first we're going to talk about ba. How are we going to pronounce ba? Ba is pronounced from the wet part of both lips. Wet part means that when our lips meet, when we normally close our lips, हम अपने होंठों को जब नॉर्मल बंद करते हैं तो हमारे लिप्स के जो पार्ट्स मैच करते हैं, the inner part of our lips. If you're going to draw the lips, so this is basically the outer part. So the inner part, यहाँ से जो लिप्स के अंदर की जगह है, जो गीला हिस्सा होता है, उससे हम बा को अदा करेंगे, बा नॉर्मल। And meem, we're going to pronounce meem from the dry part of lips. अब dry part क्या है? ये जो हमारा outer हिस्सा है लिप्स का। इन दोनों को जब हम when we're going to meet these, यानी dry part of the lips, meem will be pronounced. We'll fold our lips, lips को हम fold करेंगे और meem को pronounce करेंगे। खुश्क हिस्सा जो है, लिप्स को fold करके meem को pronounce करना है, meem. And make sure to keep your sound within your mouth. नाक में आवाज नहीं लेके जानी, मीम नहीं करना, मीम। Now wow. Wow will be pronounced by the rounding of both lips. जब दोनों होंठों को हम गोल करेंगे तो wow अदा होगा। Wow. It's very important कि जब भी wow को हम pronounce करें, for the pronunciation of wow, it's very important that we round our lips. अगर हम अपने lips को round नहीं करेंगे तो हम wow को गलत pronounce करें। Now we'll talk about fa. Fa will be pronounced when the edge of the upper front teeth, जो हमारे ऊपर के सामने के दांत हैं, upper front teeth, the edge of the upper front teeth is going to touch the wet part of the lower lip. ऊपर के दांतों का जो किनारा है, जो सिरा है, वो हमारे नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को टच करेगा। वेट पार्ट पे हम ऊपर वाले दांतों को लगाएंगे। फा, अपर टीथ लोअर लिप के वेट पार्ट पे लगेंगे, तो फा प्रोनाउंस होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेन आर्टिकुलेटरी ऑर्गन। लिप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑर्गन विच इज हलक, द थ्रोट, जो हमारा गला है। So the next part is the throat, halaq. And basically यहाँ पे जितने भी हम letters को पढ़ेंगे, जितने भी वो उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है या उनको पेयर्स में रखा हुआ है, उनके नाम हैं, लेकिन हमें सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हुरूफ हलकिया का नाम याद रखना है, वो भी इसलिए because when we'll study about the rules of नून साकिन and तनवीन, तो वहाँ पे हमें इनका नाम की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम हुरूफ हलकिया का नाम याद रखेंगे। So the letters pronounced from halaq, the throat, they're known as huruf halakiya, the halakiya letters. There are 6 letters. Lips से pronounce होने वाले letters 4 थे, और halaq throat से pronounce होने वाले letters 6 हैं. The throat is distributed into further 3 parts: upper throat, middle throat, and lower throat. These 6 letters are Hamza, Ha, Ain, Ha, and Ghain, Kha. Hamza, Ha are pronounced from the bottom part of the throat. जो हमारा गले का
लोअर हिस्सा है, हमारे थ्रोट का आखिरी हिस्सा जो हमारी चेस्ट के क्लोज होता है, मतलब हमारी चेस्ट से ऊपर जो गले का हिस्सा स्टार्ट होता है, दैट पार्ट ऑफ द थ्रोट इज लोअर थ्रोट. उस लोअर थ्रोट से, जिसको हम अरबिक में अक्सा हलक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो जुबान है, हमारा जो मुंह है, उससे दूर होता है. उससे दूर होने की वजह से हम इसको कहते हैं अक्सा हलक, द लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट. इससे दो लेटर्स प्रोनाउंस होंगे, हमजा एंड हा. हमजा हा, यानी जो हमजा है उसमें हम बिल्कुल थ्रोट के एंड से आवाज निकालेंगे, हमजा हा. उसके बाद नेक्स्ट टू लेटर्स हैं आइन एंड हा. आइन एंड हा आर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट व्हिच इज नोन एज वस्ते हलक. हलक का यानी गले का दरमियाना हिस्सा. आइन हा, हा the middle of the throat. Ha. अब there is this difference between ha and ha. Basically अगर उर्दू लैंग्वेज में हम इसको पढ़ें, in उर्दू लैंग्वेज they are both ha. एक हलवे वाली हा एंड एक हांडी वाली हा. बट इन अरबिक they are both different. इसीलिए इनका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जो इनका मखरज है, that's बेसिकली ऑर्गन इज वन, लेकिन उस ऑर्गन में फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो पॉइंट्स में, एक लोअर है एक मिडल है. तो मिडल वाले से हा प्रोनाउंस होगा एंड हा विल बी प्रोनाउंस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट. एंड अपर पार्ट से गाइन एंड खा, जिसको हम अदना हलक कहते हैं, बिकॉज इट्स क्लोज. अदना का मतलब होता है करीब होना, इट्स क्लोज टू द टंग और माउथ. गाइन बिल्कुल टंग के एंड से जो हमारा गला स्टार्ट होता है, गाइन kha. So these are 6 letters that will be pronounced from the throat. Now we'll move to the next main point, which is the tongue. The majority letters are pronounced from the tongue because the tongue is distributed into different parts. So we're going to start with the end of the tongue, which we call aqsa lisan, the end. We call it aqsa because, you know, the end, we call it aqsa. Aqsa means away from, because it's away from our teeth. It's close to our throat. जो गले का सबसे upper part है और tongue का end part है, वहाँ से pronounce होने वाले letters को हम पढ़ेंगे. There are 2 letters, Qaaf and kaaf. They have a similar sound, and the difference between them is that Qaaf is pronounced heavily and kaaf is pronounced lightly. That's it. And a little difference between their makharij. Their makharij is almost same, but slightly, you know, this kaaf is slightly towards the mouth, and this qaaf is towards the throat. मतलब एक मखरज जो है वो थोड़ा सा पीछे गले की तरफ है, दूसरा मखरज मुंह की तरफ है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. Otherwise their मखरज same. Pronounced from the root of the tongue, जो हमारा end है टंग का, जिसको हम root भी कह सकते हैं, we can call it root. It's pronounced from the root of the tongue and the soft palate, जिसको हम बोलते हैं तालू बोलते हैं या कवा कहते हैं. मतलब जुबान का एंड जो हमारे ऊपर, जो हमारा तालू है, जो हमारा अपर हिस्सा है जुबान के ऊपर, जो हमारा मुंह का हिस्सा है, उसके एंड से टच करेगा, लेकिन उसके सॉफ्ट पार्ट से टच करेगा, क्योंकि जो गले की तरफ उसका पार्ट है, इट्स अ सॉफ्ट पार्ट, एंड जो माउथ की तरफ उसका जो स्लाइटली माउथ की तरफ हिस्सा है, दैट्स द हार्ड पार्ट. एंड इट्स explained in my Tajweed lessons, briefly explained, so you can watch that video too. So Qaaf will be pronounced from the root of the tongue, and kaaf will also be pronounced from the root of the tongue, but it will be slightly towards the mouth. That's it. Qaaf, kaaf. Now we'll move towards the next part of the tongue, which is the middle part. Waste lisan. So from waste lisan, 3 letters are pronounced from the middle part: Jeem, sheen, and ya. They are pronounced from the middle of the tongue and the middle of the plate. The ऊपर जो हमारा तालू होता है, जो हमारे मुंह के ऊपर का हिस्सा होता है, हमारे जुबान के दरमियान, ऊपर के दरमियान से, the middle of the tongue will touch the middle of the plate. When they both will touch each other, these letters will be pronounced. Jeem will fold our lips at the end of Jeem because there is meem, and meem is pronounced when the dry parts meet. So we'll fold our lips.
Jeem, sheen, ya, the easiest makharij. Now we'll move towards the next part of the tongue, which is known as tarful lisan. First we can talk about the hafatul lisan. Hafa is, if you draw this tongue, this side is known as hafa in Arabic, but in English we're going to call it the side of the tongue. So Zaad is the only letter which is pronounced from hafatul lisan, from the side of the tongue. This is the only letter. If you recite it as Zaad or Zaad, pronounced from the sides of the tongue and the roots of the upper molars. Isme we have option. We can touch this side or this, any side, either this or both. We have this option. However you feel easy and comfortable. You're going to touch this side to the upper molars, जो हमारी दाढ़ें हैं उनसे. Wad or Dod, and it's a heavy letter, so we'll recite it with like full mouth. Dod. Now we'll move towards the next part, known as tarful lisan. Rasul lisan, we can also call it Rasul lisan, tarful lisan. The edge of the tongue. 3 letters will be pronounced from the edge of the tongue. La, Noon, and Ra. Pronounced from the edge of the tongue and the part of the roots of the teeth towards the blade. एक हमारा हिस्सा होता है लिप्स की साइड पे और एक होता है अंदर की साइड पे जो होता है तालू की तरफ. तो जो हमारे दांतों का अंदर का हिस्सा है उसके साथ हमारी जुबान का जो किनारा है वो टच करेगा. It's pronounced from the edge of the tongue and the part of the roots, यानी जो दांतों की जड़ें हैं, roots of the teeth towards the blade, तालू की तरफ जो दांत की जड़ें हैं उनसे टच करेगा. Laam, Noon, Ra. Let's move towards the next part of the tongue, which is the tip of the tongue. This was the edge, and then there comes the tip, the ras, or tarful lisan, rasul lisan, the main tip of the tongue. Edge is called tarf, and the tip is called ras in Arabic. So there are 9 letters which are pronounced from the tip of the tongue. It's divided into 3 groups, so we're going to talk about the first group first. Ta, daal, and ta. It will be pronounced from the tip of the tongue and the roots of the upper front teeth. Tip of the tongue, okay? ये चीज हमें समझ आ गई कि टंग का जो टिप होगा वो लगेगा. But where will it touch? It will touch the roots of the upper front teeth. ऊपर के सामने के जो दांत हैं उनकी जड़ से. The roots of upper front teeth. So आप अपनी टिप को ऊपर के सामने वाले दांतों के पीछे जो प्लेट की तरफ उसके रूट्स हैं वहां पे टच करेंगे. ता, दाल, ta. Ta is heavy letter. Ta. And the difference between ta, dal, ta and tha, dal, la is that it will be pronounced from the tip of the tongue and the inner edge of the upper teeth. The difference is here the tip will be touched the root of the upper teeth, and it's going to touch the edge. That's the only difference. दोनों में टंग की टिप टच होगी और दोनों में upper front teeth होंगे. But the difference is ta dal ta में the tip is going to touch the root of the upper front teeth, and in tha dal ta the tip of the tongue is going to touch the inner edge of the upper teeth. Inner edge means ये जो हमारे दांतों का जो सिरा है लेकिन अंदर वाली तरफ, जुबान को बाहर से लाके टर्न नहीं करना, उसी के अंदर दांतों के सिरे से लगाना है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दांत हैं, इनके इस सिरे से अंदर की तरफ जुबान को लगाना है. सा, दाल, वा. These are the only soft letters in Huroof al-Hija, in these Arabic letters. ये सबसे soft letters हैं. सा,
daal, ra. Now we're going to talk about next three, the other group, which is za, seen, and saad. These letters will also be pronounced from the tip of the tongue, but the tip of the tongue is going to touch the inner edge of the both front, upper teeth, and lower teeth. It's not written here. जो हमारी टंग की टिप होगी वो ऊपर के और नीचे के. In saad al it's only going to touch the upper teeth, but in za sin saad इसमें हम ऊपर के upper and lower both front teeth और उनके edges पे लगना है, roots पे नहीं. Roots पे तो लग ही नहीं सकता because roots are like away from each other. So we're going to touch the tongue with the edges of the inner edges of upper and lower front teeth. Za, sin, saad. Saad is heavy letter. और ये huruf al-hija में in Arabic letters, these are the hardest, सख्ती से पढ़े जाने वाले letters. These are the soft ones and hard ones. Za, sin, saad. It's going to touch the upper and lower front teeth, the edges of upper and lower front teeth, okay? The tip of the tongue. So we're done with all the letters. But still we have two main articulation points left. We did lips, we did throat, and we did the tongue. Now two parts are left. One is the empty space in mouth. The empty space in nose. So the letters, there are no letters left basically. So huruf al-mada, when we're going to learn about huruf al-mada, then I'll tell you huruf al-mada are those letters which are going to be pronounced from the empty space of the mouth. A, E, U, these sounds are going to be, these huruf al-mada, these letters are going to be pronounced from this jawf. जो मुंह का खाली हिस्सा होता है, ये जो sounds आती हैं मुंह के खाली हिस्से से आती हैं. And nose is used for ghunna. The way we say inna, this sound is in the nose, it's not in the mouth. Mimma, this sound is in the nose. So these two are used for, this is used for ghunna and this is for huruf mada. And we'll do that when we'll start those lessons. Now we'll start our qaida and lesson number 1. We just did all the Makharij. We learned about the articulation points of all these Arabic letters, which are known as mufridat letters. The name of this lesson is mufridat. Mufridat is basically Arabic word used for the individual letters, separately written letters. So the mufridat letters, Arabic alphabets are 29 in number. Pronounce mufridat letters with the Arabic accent according to the rules of Tajweed and Quran. Avoid Urdu pronunciation. For example, do not pronounce be, te, se, he, he, or toi, zoi. It's twa and zo. The sound of wow, if you're going to say twa, zwa, because in Urdu we say toi, zoi. So if you're going to say twa, zwa, it's pronounced, the pronunciation is incorrect. Instead, pronounce them in the following way: ba, ta, tha, ha, kha, ta, tha. From amongst these 29 letters, there are 7 letters that are always pronounced with the thicker voice, the heavy letters. These letters are called musta'liya letters. Huruf musta'liya. This is also Arabic word used for the heavy letters. Musta'liya letters, this is their name and you don't have to forget this name. Musta'liya letters, these 7 letters are kha, saad, daad, ta, ra, ghain, and qaaf. Their combination is khussa, zagtin, qiz. Khussa, zagtin, qiz. This is actually an easy way to memorize these letters. Khussa, zagtin, qiz. Okay? Only 4 letters are pronounced from the lips, and we just studied those: ba, fa, meem, and waw. Except these letters,
Do not let the lips move while pronouncing any other letter. It's very important. Except for these 4 letters, if you're going to move your lips, the letters will be pronounced incorrectly. That means, I just gave you an example about, अगर हम त्वा पढ़ेंगे, हम अपने lips को गोल करेंगे, so it will be pronounced incorrectly. That's an incorrect pronunciation of the words. So हम lips को बाकी letters में, किस lips के लिए lips से pronounce होने वाले there are only 4 letters, तो आप lips को बाकी letters में use नहीं कर सकते. So I hope all of this is clear. And once now we're going to recite all of these letters, and inshallah then we'll start with the next lesson tomorrow. And if you have any questions, you can just comment below. Maybe मैंने कुछ points miss करती हूँ, but in Tajweed lessons I've explained all these Makharij in detail, so you can watch those videos too. तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं की, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इनको समझाएं. अब हम इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, zaal, ra, za, seen, sheen, saad, daad, ta, ra, ain, ghain, fa, qaaf, kaaf, laam, meem, noon, वाव, हा, हमज़ा, या. हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, इसमें कुछ और बातें थी, सो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. और इसको हम एक दफ़ा थोड़ी सी डिटेल के साथ इस फर्स्ट लेसन को हम पढ़ेंगे, देन विल इंशाल्लाह मूव टू द सेकंड लेसन. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए और इसको सीखना हमारे लिए आसान फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.